So we'll start with some questions that I've already written down for this collective. अगर आपके साथ resonate करता है तो आप सुनिएगा, नहीं करता तो please don't force it. The first question is, what is currently or has recently ended or is ending in your life? What is asking to be let go of? Like आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या है जो आपकी ज़िंदगी से भी जाना चाहता है? I'm using the Sufi tarot deck. So the first card that appeared is a 10 of staffs. Interestingly, मैंने पूछा कि what is asking to be let go of, what is asking, like what is ending. So if you are acquainted with the tarots or numerology, आपको पता होगा कि जो नंबर 10 है वो एक ending का, मतलब कुछ ख़त्म होने का number होता है. Like it has 1 and 0, so it's also a new start. कुछ ख़त्म होता है तो कुछ नया शुरू होता है. 10 of staffs is often overburdened feel करना कि you're like a lot of responsibility you've taken on your back, but आप पे किसी ने डाली नहीं है. ज़रूरी ये नहीं कि आप पे किसी ने डाली है. Often हम ज़िंदगी में responsibilities लेते हैं, हमें कोई देता नहीं है necessarily. But like emotional responsibility होती है, social responsibility जो हम दूसरों की लेते हैं, वो हमें किसी ने specifically कहा नहीं होता कि हम carry करें, पर हम carry करते हैं और हम बहुत थक जाते हैं. इस कार्ड पे देखें तो ये भी दिखता है कि like he's carrying this to build a house, अकेले बना रहा है और अभी वो मतलब वहाँ पहुँचने वाला है, but he's tired. This is heavy. So you might be feeling exhausted. आप अपने आप को बहुत थका हुआ feel कर रहे होंगे in the last few months, even a year. You've been feeling drained. I want to ask कि ये responsibilities कौन सी, क्या responsibilities हैं जो आपने अपनी बैक पे पकड़ी हुई हैं? Excuse my Urdu. It's not the greatest. Interesting. मेरा next question जो मैंने इधर लिखा हुआ है is like the first question is कि क्या ख़त्म हो रहा है, क्या letting, like what is asking to be let go of, and my next question was what new beginning awaits you. Like मैंने इसका follow up question पूछा कि like what are the burdens, क्या चीज़ है जो आप carry कर रहे हैं. And what I got is the Ace of Coins, which is normally new beginning का symbol. But just let me sit with it. The burdens that you're carrying, जो आपके ज़रूरी नहीं है. Like यहाँ पे ना इस coin को, like coins are the materialistic, like the material abundance in our life. हमारी safety, घर, रिश्ते, मतलब जो material world में दिखते हैं. तो इसमें it's as if she is planting it in the dirt, ना एक foundation रख रही है for some stability. It gives me a feeling कि आप अपनी, like आप पे जो responsibility है वो like material or financial stability for your family, which makes sense कि वहाँ पे तो शायद maybe आपने मतलब अगर आपके बच्चे हैं, if you have a partner you need to provide for, it makes sense. You have that responsibility. At the same time, you are doing more than you need to.
you are doing more than you need to alone. Like आप जहाँ पे help ले सकते हैं आप ले नहीं रहे. It doesn't have to be financial help. लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए भी कहीं भी कोई help की ज़रूरत होती है. It's like you are reluctant to asking for help क्योंकि आपको सब खुद करना है. Somewhere along in your life आपको सिखाया गया कि आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते कि आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. So you decided कि you had to do everything on your own. हम often इस तरह करते हैं, and many of us, and there is no shame in having that mechanism to cope, but you are currently working on your stability, your material stability. Or material doesn't mean necessarily कि अगर आप financially secure हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि like material stability is not necessarily only financial security. But laying the foundation, किसी घर का बनाना foundation, like it can also be in relationships. Okay. Working on, like some of you, many of you will be working on financial stability, but some of you are also working on relational stability. Starting anew, कुछ खत्म हुआ है, something has ended, और आप कुछ नए तरह से start करना चाहते हैं. So you actually don't want to repeat the old patterns, जिसकी वजह से आप पहले situations में पहले जो जिस सिचुएशन से आप गुजरे, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में आए हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि like you change your patterns, you want to grow and evolve, so you don't end up repeating, कि आप वही चीज़ repeat ना करें. For some of you there is also a move, बदलना, घर बदलना या कुछ change करना, जहाँ पे आपको ये feel होता है कि आपको like responsibility burden लगता है आप पे, you feel responsible for it going well, या आपकी वजह से कोई move है. So in the question कि what is asking to be let go of, कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी क्या एनर्जी है जो चाहती है कि आप आपकी ज़िंदगी से निकलना चाहती है, and that is that कि आपको सब कुछ अकेला करने की ज़रूरत है. Like let go of that belief system wants to go, so you can ask more for help, so you can unburden yourself. The right people, हर किसी से नहीं, but there are people like you need to be अपनी discernment, अपना मतलब सोच समझ के जो कि किससे आप हेल्प ले सकते हो. हेल्प मांगने में कोई शेम नहीं है. और आई लव दिस एनालॉजी के कहते हैं कि हर जानवर, इंसान भी तो जानवर है ना, हर जानवर उस इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होता है जो जिस इंस्टिंक्ट के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता. लाइक दे से snails, they are born with teeth. अगर उनके teeth ना होते, they won't be able to eat. Like they're born with it. For instance, kangaroo babies, they're born with the instinct to crawl into their mother's pouch. जो इंसान है ना, the जानवर इंसान, the first thing that we do when we are born, पहला काम या पहली चीज़ हम क्या करते हैं जब हम पैदा होते हैं, the first thing we do is cry for help. We scream for help. So we are born with the ability that is absolutely necessary for our survival. But ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं ज़िंदगी में, society as well, like this materialistic society also teaches us कि help लेना weakness है, कि हमें सिखाया जाता है कि हमें help नहीं मांगनी. We have to be self-reliant. Interesting. Before I started this reading, मैंने questions लिखे थे, तो I was like, who is this reading for? Like a sign who this reading is for. उस वक्त तो कुछ नहीं है, मैंने पहले सोचा था कि cards निकालूंगी. But suddenly, one of the words that I wrote down is actually self-reliant. People who are overly self-reliant, overly, क्या कहते हैं, self-reliant, like independent, yeah, like over independent, super, like unhealthy,
So it's important to rely on the support that is in your surrounding, to be able to ask for help. That is what is asking to be let go of, that self-reliant, that overly independent nature. So, next question. What new beginning awaits you? Like, what is trying to enter your life? मैंने parentheses में लिखा है कि what abundance is trying to enter your life. So, अगर आप इस चीज़ को let go करते हैं तो क्या ज़िंदगी में आपकी आना चाहते हैं? कौन सी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आना चाहती है? Wow. It's the Sun card. Shams. I love this card. Joy, light, bachpana, like joy of life, khelna. अगर आप देखें इस कार्ड पे, like laying the foundation, you can see the sun, like the sun rays are shining, and I don't know if you can see on camera कि यहाँ पे ऐसे glitters आ रहे हैं ना, and then the energy that wants to enter is the sun, the life जो हमें life देता है इस दुनिया में, like it's not even कि वो आना चाहती है ये energy, it's already there, but आप देख नहीं पा रहे. Like the sun is also in बच्चों पे like वो particles गिर रहे हैं ना, and it's already there, like it's saying कि you are protected, you are supported, you're allowed to let out your inner child and play. Playfulness wants to enter your life. So burden काम कर करके उठा के हम लोग इस adult grown up life में फंस जाते हैं, अपना बचपना, अपना like वो innocence, मासूमियत भूल जाते हैं. वो वापस आना चाहती है आपकी ज़िंदगी में. मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आप इस चीज़ को embrace करें, अगर आप इसको independence को छोड़ें, अपने अंदर जो बचपना है, खेलना, हंसना, joy, उसको आप आने दें, उसको आप embrace करें, embody करें, तो how can that affect or show up? Like आपकी ज़िंदगी में क्या change हो सकता है? Sorry, बहुत सारे कार्ड निकल गए थे. Interesting. ये है कार्ड सबर. In traditional tarot, this is the Temperance card. This is for me, this card is very peaceful. In the traditional tarot, the Temperance, वो उसने हाथ में 2 cups पकड़े होते हैं और उसमें पानी को आगे पीछे कर रही होती है, like alchemizing the emotions, उनको temper करना, उनको जो हमारे अंदर painful experiences होते हैं, painful emotions होते हैं, उनको जाके process करना and then temper them, बदलना उनको into joy. That is the traditional, can often be a meaning of the traditional Temperance card. And in this one आप देखें तो ये आधी खड़ी है ज़मीन पे और आधी मतलब पानी का हिस्सा है. And the water is the element of emotions and the earth is the element of the earth, the material world, the groundedness. Like having that balance between your emotions, your intuition, your inner world and your external world will be more in balance. Yes, currently out of balance. Yeah, currently your focus is in your focus is on too much on the material world. Well, it makes sense when you feel like you have to survive.
At the same time, you are ignoring basic needs. And sometimes उन चीज़ों को अपने अंदर वो ढूंढना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, like किस तरह छोड़े. So it feels like the Shams Sun card is a guidance on how you can easier get access to that part of you by being playful, by tuning into कि आप आपका दिल क्या चाहता है, like the meaning of now the title of this reading, I was going to call it Qalb-e-Tapaa, the Fool's Journey, the start of a new chapter. Qalb-e-Tapaa, like what is your heart burning for, or like yearning for. And then like the playfulness card, like once you get in touch with your playfulness, your joy, किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, that is how you can start getting in touch with what is right for you, what is true for you. तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आना चाहता है. और इसमें भी देखें तो आप ये सब्र का जो कार्ड है, the temperance card, there is a moon in the end there, ना. The thing is कि moon reflects back the sun's light. So it's almost like कि वो balance, जैसे हम often ना अपनी emotions से डरते हैं, उस darkness से डरते हैं, उसमें खो जाने से डरते हैं. But when you have your own light, when you are your own sun, अंधेरे में भी फिर आपकी जो रोशनी है, जो नूर है, वो चांद पे पड़ती है, and the चांद and the moon will reflect it back to you. Even in the darkness, you will be guided. So I forgot to charge my phone, so my battery ran out. So where were we? The sun card, Shams, joy, playfulness wants to enter your life. अगर आप इस चीज़ को embody कर सकते हैं, then sabr is what's coming to you. Sabr normally means patience, but the temperance card is also about balance. And this card में there is a peacefulness, like it's a calmness. And the waters, which symbolize the emotions, the waves are not big, they're calm, the calm waters. And also it reminds me of what Rumi says, that patience is the key to joy. So let's see, the next question is, what shadow aspects are you currently working with? And how is it reflecting back to you in your reality? Let me see. इनको थोड़ा सा side पे रखती हूँ. Shadow aspects. What are shadow aspects? So, shadow aspects होता क्या है? हमारे जो अंदर, आप सब कैसे होता है कि हमारी sides होती हैं, क्योंकि हम हर sides हर किसी को तो नहीं दिखा सकते. But हम सब में कुछ ऐसी sides होती हैं जो हम समझते हैं कि अगर किसी ने इन चीज़ों को देख लिया, इनको समझ लिया या देख लिया, तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, या कि हमें लोग बहुत बुरा समझेंगे. उस चीज़ को हम अपना shadow बना के रखते हैं, not understanding that it is often our shadow that is containing our light. क्योंकि our shadow is not something evil. Our shadow is a part of us जो हमसे बहुत प्यार करता है, like something that just wanted to protect us, जो चाहता था कि like a part of us. जब हम छोटे थे, somewhere along the line ज़िंदगी में हमने ये सीखा कि अपनी ये side दिखाने से हमारे लिए survival नामुमकिन हो जाएगा. So that shadow part of us, उसने उस light को छुपा लिया. लेकिन होता ये कि instead of like acting out of true authenticity, we start acting out of our shadow. कि जो हम हैं नहीं, उसका एक shadow बन के हम खुद रह जाते हैं, उस shadow को छुपाते छुपाते. There was something else I wanted to say. हाँ, like about survival, कि जब हम छोटे होते हैं, कभी ना कभी हम कुछ कहीं सीख लेते हैं कि like subconsciously
या कोई साफ साफ हमें कहता है इस तरह एक्ट नहीं करना, बट किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें सिखाया जाता है कि देयर आर पार्ट्स ऑफ अस जो एक्सेप्टेड नहीं है सोसाइटी में. एंड इट लिटरली, हम कहते हैं सर्वाइवल मैकेनिज्म, लेकिन इट लिटरली मीन्स सर्वाइवल फॉर अस व्हेन वी आर किड्स. क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, लाइक जब हम बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं, कोई खुद तो कुछ नहीं कर सकते ना हम when we are there, at least when we are tiny babies. तो उस वक़्त belonging to our caretakers, क्योंकि हमारे caretakers हमें reject ना करें, हमारे लिए like it is literally about survival. because उस वक्त अगर हम अपनी society में, community में caretakers के साथ belong नहीं करें, if we are alienated या हमें बाहर निकाला जाए, we cannot survive on our own. So you see, back to asking for help. We cannot survive without help. जब हम बच्चे होते हैं तब तो हम सोचते हैं कि यार, हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे हेल्प मांगते हैं, हम कहते हैं मांगनी चाहिए. पर who tells us or who told us कि when does it stop? Who told us कि कब हेल्प मांगना बुरी बात है? So let's see, what shadow aspects are you currently working with? And how is that reflecting back to your life? We'll start. पहला क्वेश्चन कि आप इस वक्त आपके कौन से शैडो एस्पेक्ट्स आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा ज़ाहिर हैं? नाइन ऑफ स्टाफ्स. इंटरेस्टिंगली जो आपका अभी इस वक्त क्या था, वो जो चीज़ ख़त्म होना चाहती है वो है 10 ऑफ स्टाफ्स, मतलब 10 ऑफ wands. And the shadow aspect is 9 of staffs. Traditionally 9 of staffs या 9 of wands make for you're getting close to completion, no? In this card, however, it represents a fear. यहाँ देखें तो ये जो औरत है, like this lady is burning incense, अगरबत्ती जला रही है, but like look at her expressions. She's not calm, she's not peaceful. वो बस ऐसे ही like energetically घर साफ करने के लिए या जिस चीज़ की बिल्ली नहीं जला रही. She is worried, she's scared. So it's fear. It's fear. It generally is. But what is this fear of? तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि जो आपका इस वक्त जो आपकी एनर्जी जो आप में से जाना चाहती है वो है being overly independent, and then जो shadow aspect है वो आपका जो fear है जो जाहिर हो रहा है वो है 9 of wands के. It's almost like that fear is like, no, you can't let go. You have to do everything on your own. वो डरी हुई. What specifically is this fear? Specifically किस चीज़ का डर है या किस चीज़ को ward off करे, किसी चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए. Clearly अपने आप को किसी चीज़ से बचाने के लिए जलाई है ना उसने अगरबत्ती. तो ये आप किस चीज़ से बचाना चाह रहे हैं अपने आप को? Like intuitively, like it is fear of disappointment, trusting. The card that came is 9 of Cups. So 9 of Cups is generally known as a very positive card in the deck. ये होता है wish fulfillment का card कि देखो यहाँ पे सब खुशी सब, like everyone is celebrating खुशी, and this is like the I forgot the name of it, like the divine something pouring, मतलब सबके लिए. Interestingly जो चीज़ हम often चाहते हैं ना सबसे ज़्यादा, उसी चीज़ को हम subconsciously उस चीज़ से fear करते हैं. But these are both 9s.
I want to ask more about it, like how, like हम, it's almost like subconscious जो फील होता है आपका वो इस खुशी को पाने से, like अंदर ही अंदर हम कहीं ना कहीं से, आप हम जानते भी नहीं, कहीं ना कहीं से कुछ part of us deep inside us समझता है कि हम इस खुशी के काबिल नहीं हैं. Let me see the book. इसमें लिखा है इसके नाम जो मैं कहना चाहती हूँ. Interestingly, इस book में क्या लिखा है? Because the card that we got was sabr, not patience. So this is from a Sufi person, Hazrat Inayat Khan, who says कि अब English में, if you let the desire go unfulfilled and you lack the patience, needed to accomplish the desire, your spiritual progress will be arrested. When you have accomplished one desire, you will have that something which is needed for the accomplishment of something greater. Every desire you accomplish is one step further toward the final goal, which every soul ultimately has to reach. And interestingly, what you fear, ना? इसमें इस बुक में ना थोड़े से like contemplations के लिए, like reflection के लिए कुछ सवाल भी हैं. And the two questions here are, how do I believe desire connects with spiritual progress? What associations do I have with wish fulfillment? I know in many religions, like desire को negative समझा जाता है, कहा जाता है, माना जाता है. पहले मैं उर्दू में भी translate करने की कोशिश करूँ कि अगर आप अपनी desire को, half उर्दू, अपनी desire को fulfill नहीं होने देते और आप में वो सब्र नहीं है जिसकी ज़रूरत है अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए, तो आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जो आपकी रूह की, जो हम जिस वजह से यहाँ इस दुनिया में आते हैं, वो रुक जाएगा. जब आपकी एक डिज़ायर फुलफ़िल होती है, तब आपको उस डिज़ायर में कुछ ऐसा मिलता है जिसकी आपको ज़रूरत है अपनी नेक्स्ट डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए. और अपनी हर ख्वाहिश या डिज़ायर को फुलफ़िल करने से आप एक कदम वो अल्टीमेट फुलफिलमेंट की तरफ पहुंचते हैं. तो आई फील कि दिस कार्ड इज स्पेशली लाइक फॉर दोज, एक तो होता है वो सबकॉन्शियस फियर हम में कि लाइक वी डोंट डिजर्व व्हाट्स गुड इन लाइफ, बट दिस इज ऑल्सो लाइक आई गेट दिस कि फॉर दोज हु बिलोंग टू दैट बिलीफ सिस्टम और रिलीजन जहाँ पे डिज़ायर को बुरा माना जाता है कि दिल में कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग इज़ वन विद गॉड एंड हिज डिज़ायर इज़ आवर डिज़ायर, और दैट इज़ ट्रू टू an extent, but like my belief or the Sufi belief, like there are two types of desires. एक जो रूह की डिज़ायर होती है, I have that question too. एक जो रूह की डिज़ायर होती है और एक जो हमारा ईगो, हमारा माइंड यहाँ का जो इस दुनियावी चीज़ों के लिए जो पीछे भागता है. There are two different kinds. And हम कहते तो हैं कि like खुदा की जो मर्ज़ी है उसको अपने दिल की मर्ज़ी बना लो. But the thing is, how do you know? How do you know? We can skip to that question after. How do you know that desire is वो रूह की है, खुदा की तरफ से है, या वो आपके दिमाग की है? So don't brush off every desire that you get if you are of that religious belief कि desire is a bad thing. If your heart is truly longing for something, किसी चीज़ के लिए yearn कर रहा है, तो it is meant for you if you have the courage to pursue it. And I'm pretty sure, all right, the language of your soul, which is reading में जो कहा जा रहा है, is joy. Once something you desire, अगर उसको पाने में उसको on the way of acquiring that, if you're experiencing joy,
that is your sign. Okay, it's right, it's true, it's your soul's truth, your heart's truth. But let me just ask for like another card. What else? The fear. Yeah, interesting. Dervish, but it's also a 9. So 999 can be a sign for you. हो सकता है कि आपको 999 बहुत दिखते हैं या 999 आपको आने वाले वक्त में दिखे. 999 often also symbolize ending, कि कुछ ख़त्म होने वाला है या कुछ ख़त्म होना है. When the dervish card comes in the form of the fear, makes sense कि आप इतना काम कर रहे हो अगर material. So this card वो जो मैं कह रही थी कि desire and the religion factors playing in is especially for those of you who are working on the relational stability. इस दुनिया में कि relationships की safe stability हो, कोई partner हो या कोई family, उस चीज़ में कि उस चीज़ को desire करने में. But for those of you who are working on material financial stability, the fear is this. So generally the dervish card is कि आप सब कुछ छोड़ के जितना आपके पास है उतना काफ़ी है, and the only thing you need is God's, the divines, the universe, source, love, उसका प्यार आपके दिल में, and you need nothing. But as it comes in the form of fear, it comes like, for me it's like कि आप, you're scared if you don't do it you'll have nothing, like the fear of not having enough. But also the fear of being lonely if you are currently trying to stabilize your relationships or find a stable partner. इसमें कुछ और भी मैं पढ़ना चाहूँगी, जैसे the dervish, इसमें कुछ लिखा है मुझे याद है. एक मैसेज है इसमें. एक पुरानी कहानी है, अब मुझे नहीं पता दरवेश like for me it's dervish, but the hermit in the traditional deck. So एक बहुत पुरानी कहानी है, the ancient tale of a dervish. उसने वो रात को लोगों के दरवाज़ा बजाता था और कहता था उठ जाओ उठ जाओ. तो यहाँ लिखा है कि अगर ये आपके दरवाजे पे भी आया है ये कार्ड, तो ये आपको भी कह रहा है उठ जाओ. So it's a call to awaken to a new perspective, a new way of being. You're being guided to your inner wisdom, to the light within you. Yeah. ये दिन कहा था ना, जैसे दूसरा सवाल क्या करते हैं हम. Yeah, your soul's language. We'll do that after. I want to see like this fear, how is that reflecting back to you in your life. कि जो हमारी ज़िंदगी में जो भी हमें दिखता है ना, वो हमारे अंदर का reflection होता है. So if you're seeing a lot of rejections, if you're seeing a lot of people not helping, then most likely it's a fear within you. Okay, you will be rejected always. For instance, ये तो example था. So the question is कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त किस तरह शो कर रहा है, like how is it showing itself in your reality. कि जिस वजह से जो fear होता है वो एक reinforce होता है ना हमारा. Instead of जो चीज़ें हम देखते हैं ना कि जब भी होता है ये ऐसे ही होता है, like हम कहते हैं कि बार बार जो मैंने सोचा था वही हुआ ना, reinforce करते हैं हम अपने belief को, like these are the limiting core beliefs, उस चीज़ को reinforce करते हैं. But instead of reinforcing them, अगर हम उसको ऐसे देखें कि
ये कुछ रियलिटी मुझे कुछ दिखाना चाहती है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसको मैं बदलना, मेरे बदलने से मेरी दुनिया बदलेगी. So if you see repeating patterns happening in your life, often वो एक साइन होता है कि यहाँ पे कुछ है, कि क्या है आपकी ये सोच जिसको बार बार कंफर्म किया जा रहा है, जो आप समझते हो कि कंफर्म किया जा रहा है, बट इन रियलिटी आपको दिखाया जा रहा होता है कि इधर चेंज लाओ. So how is it showing up in your reality, in your physical reality, this fear of loneliness, this fear of not having enough, this fear of wish fulfillment, desire? How is that showing up in your life? बहुत ज़्यादा. So 1, 2, 3 shuffle. So interesting. It's the daughter of staffs, like the page of wands. Interestingly, it is also an incense, and the shadow you're working with, she's also burning incense. मतलब अगरबत्ती. Page of wands जो होता है, होती है, or princess of wands, she is very passionate. She's full of curiosity normally, full of क्या कहते हैं उसको, joy for life. Just want to get some help from the book. उसमें energy होती है, लेकिन how is it showing up? It's showing up कि instead of वही जो energy जो आपकी, अगर आप अपनी enjoyment में, अपने pleasure में use करते हैं, you would be energized. It's showing up as these burned butts, कि आप उसको जला रहे हो और उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. Like you're feeling, as I started this reading, exhaustion. That is how it's showing up. That is how it's affecting you, that fear. आप समझते हो इतना काम करना है, ज़रूरी है, ये करना है, सब समझते हैं. It's all valid. There's a good reason, valid reason for that. हम लोग ये कर ले, बस ये कर ले तो फिर सांस लेंगे. But thing is कि the rest, हम हमेशा समझते हैं ये काम कर ले फिर हम आराम करेंगे. आज काम नहीं किया तो आराम क्यों करना? Because आराम is not a reward. आराम कोई इनाम नहीं है. आराम एक ज़रूरत है, एक बेसिक ज़रूरत, एक नेसेसिटी है जिसके बिना इफेक्टिव काम हो ही नहीं सकता. हम समझते हैं कि लेकिन अगर मैंने ये ना किया तो फिर कौन करेगा. ऑफन जो हमने अपने दिमाग में बनाया होता है ना कि ये हो जाएगा अगर ये काम ना किया. अब जस्ट फॉर इंस्टेंस मैंने बर्तन ना धोए तो घर गंदा होगा ये. बट हु इज़ कमिंग, हु इज़ जजिंग? मोस्ट लाइकली जस्ट योर सेल्फ. और अगर कोई और कर भी रहा है तो हाउ इज़ इट अफेक्टिंग योर लाइफ? Why are you letting that affect your life? Why are you burning yourself? Why are you letting these fears? Like, these are just some questions for you to contemplate, journal about if you want. Why are you letting that fear, for instance, of judgment, why are you letting that fear burn your energy off instead of using that energy to have fun? मेरे पास ना बहुत साल पहले एक दफ़ा मेरी फ्रेंड आई थी फॉर अ वीकेंड. तो मतलब फ्राइडे को आई थी, संडे को जाना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था. तो सैटरडे नाइट वी हैड लाइक हमने डिनर बनाया, सब कुछ, किचन में गन डलता है एंड एवरीथिंग. उन्होंने संडे को जल्दी जाना था. एंड देन शी इज़ लाइक, हमने मतलब खाया पिया, बातें की, थोड़ा बैठे, एंड शी इज़ लाइक चलो लाइक लेट मी हेल्प यू क्लीन द किचन. आई वाज लाइक नो, आई कैन डू इट टुमारो व्हेन यू लीव. तो कहती लेकिन तुम फिर सारा अकेली करोगी. तो मैंने कहा हाँ, बिकॉज इस वक्त तुम यहाँ पे हो, कम मिलते थे हम, तो जब तुम यहाँ पे हो तो मैं वो टाइम अपना बर्तन साफ़ करने में या किचन साफ़ करने में क्यों लगाऊँ? आई रादर स्पेंड दैट टाइम एंड एनर्जी इन एन्जॉइंग विद यू, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना, नॉट इन सफाई करना. सफाई तो हो जाएगी बाद में भी. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि लाइक यू कैन चूज़ what you are spending your time and your energy on. Many times हमारे पास ना ज़िंदगी में there are more choices than we
let ourselves believe. We think we don't have choices because हम उस fear of judgment को अपनी ज़िंदगी control करने देते हैं. Let me see. Are there any more questions? ठीक है. Yeah. So, what is your heart? पहले what is your heart, your soul longing for? मतलब वो क्या desire कर रही है? Your heart, your soul, आपकी रूह. And what is the language of your heart or your soul? I will be using soul as the root, the eternal being that we are. For me, the heart often defines more. No, the heart is also, like, I will be using the heart and soul. I will be using the heart and soul, like they mean the same to me. So let's see, what is your heart longing for? आपकी मतलब दिल की, आपकी जो interesting. 7 of Swords. What is 7 of Swords? Like, what is your heart longing for? So I said that 7 of Swords is, in many people interpret it as betrayal, but in the traditional card, वो मैं दिखाती हूँ आपको. Sorry, so I have no patience, no sabr to actually charge my phone completely. तो वो बार ख़त्म हो जाता है, so I just needed to stop and recharge it. Anyways, the 7 of Swords, and I just recharged it tiny bit, but hopefully we're done soon. 7 of Swords. ये कुछ ना like swords लेके भाग रहा है, like normally betrayal का, trickery का card है ना. But the thing is कि अब देखें तो this came in is the question कि आपकी soul, आपका heart क्या desire कर रहा है ना. Brings me back to the shadow aspects of ourselves. कि देखें यहाँ पे सूरज की, शम्स की, the sun is lighting like है, लेकिन वो shadow में छुपने की कोशिश कर रहा है. The thing is, what your soul wants, I feel, इसमें आता है कि within a खुदा, divine source, they say कि he's all seeing, क्या al-basir, right? He sees everything, तो छुपा नहीं जा सकता. So your soul is desiring for you to come out of the shadows, to come out in the light. आप समझ रहे हो कि आप छुपे हुए, आप छुपे नहीं हुए किसी से, मतलब दुनिया से तो छुपे हो गए, but अपने आप से नहीं आप छुप सकते. So it's wanting to come out, like your soul's truth. Let me ask, like, and what sorry. I want to ask if you do try to come into the light, like what can it lead to? Like how will it affect your life? आपकी ज़िंदगी में क्या effect आ सकते हैं? It can be something sometimes we perceive as negative, but in the long run वो हमेशा positive होते हैं. 7 of Swords. Like literally, like come out of the shadows. हम अभी shadow aspect की बात भी कर रहे थे, तो and he's running in the shadows. Light है, वो समझ रहा है कि वो छुप के कर रहा है, but it's also about making a choice, क्योंकि 7 swords होती हैं, 5 उसने हाथ में पकड़ी, 2 गिर गई हैं. And if you know tarot, 2 of Swords is about choice. कोई ऐसी choice जहाँ पे हमारे पास clarity थोड़ी बहुत बेशक नहीं होती, लेकिन like we are almost pretending not to know because we're scared to make a choice. लेकिन एक choice ना करना भी एक choice है. एक choice ना करना का मतलब है कि मगर आपके पास 2 मुश्किल choices हैं, आप वो नहीं कर पा रहे, तो तीसरी choice है कि आप कोई choice ना करें. और अगर आप कोई choice ना करेंगे, then you are actively choosing to stay in that state.
उसी चीज़ में जिसमें से आप निकलना चाहते हैं। सो वो क्वेश्चन के what can happen if you bring your shadows out, कि अपने आप को लाइट में लाएं, अपने आप को दिखाएं जो आपके अंदर है. The card that came out is Malika of Cups, Queen of Cups. So the Queen of Cups is also known as the mini Empress. She's of the water element. No, not the Empress, I'm sorry. The High Priestess, Murshida. By doing that, you shedding light to your shadow का मतलब है कि अंदर जाके अपने आप को पहचानें. आप ज़रूरी नहीं सारी दुनिया को बताएं, पहले अपने आप को तो खुद जानें कि क्या है जो आप चाहते हैं, क्या है आपकी desires, what do you need, what do you want, what brings you joy, किस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ें आप जो ऐसी करते हैं जो आप चाहते नहीं हैं, जो आप दिल से नहीं चाहते, बस दुनिया के लिए हाँ किए जाते हैं. इन चीज़ों को जानना पहचाना. What will happen is that you will get in touch with yourself, your heart, your intuition, your higher self. जो डिवाइन है, जो खुदा है, वो कहते हैं ना कि साइंस हर जगह है सबके लिए. जो देखे मतलब जिसकी आंखें खुली हैं वो देख सकता है. तो this is more कि you will get more in touch with those signs, like you will be able to see them and get in touch with your intuition. आपकी ज़िंदगी में make decisions more confidently. Interestingly, I was talking about decisions ये कार्ड निकलने से पहले. So फिर आपको ज़िंदगी में you will also be able to start seeing from a higher perspective. जो दिख रहा है सामने बस वो नहीं, मतलब आपको और समझ आने लग जाएगी, ज़िंदगी की समझ आने लग जाएगी आपकी अपनी. And you will get in touch with your heart. You will find compassion to yourself. So what is the language of your soul? आपकी soul की, आपकी रूह की language की. आपको कैसे पता है कि आपकी रूह के लिए कुछ अच्छा है? वो कैसे बताती है आपको? Okay, जब ये मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था तो when I was thinking about कि हम बाद में पूछेंगे, फिर मैंने नहीं किया. I was thinking कि to confirm जो मैंने बोला कि it's joy, I thought कि ये कार्ड निकलना चाहिए, 9 of coins or 9 of pentacles, because मुझे याद है like how she looks in that card. She's abundant, she's happy. So जहाँ पे आपको खुशी हंसी महसूस होती है मतलब दिल से, और करिए. Wherever you find joy, do more of that. थोड़ी सी भी मिलती है ना, अगर कहीं नहीं मिल रही ना जो अगर आप ज़िंदगी में कुछ ऐसी तरह से ऐसी चीज़ से गुजरें जहाँ हंसना बिल्कुल नामुमकिन है, पर जहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ कम हो या थोड़ा सा वो नमनेस कम फील हो, वो करें until you start finding your smile, finding your joy, finding your laughter. अपनी हंसी को ढूंढें, अपनी खुशी को ढूंढें. The thing is कि हम often ना दुआ में भी मांगते हैं या जब भी कुछ मांगते हैं हम मांगते हैं चीज़ें. मगर आप सोचें कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में ना. अगर आप सोचो कि आप ज़िंदगी में आपकी लाइक सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, अगर आपके बच्चे हैं कि लाइक they will be healthy, this and that, या आपके पास घर हो, ये हो, वो हो, लेकिन आप सोचें अगर वो आपके पास सब कुछ है, what is it that you're feeling? आप फील क्या कर रहे हैं? क्योंकि उस वक़्त आप जो फील कर रहे हैं most likely it's सुकून, peaceful, like peace, सुकून and or joy. And this is like the peaceful joy, like इसके लिए कि आंखें बंद हैं and she's just in full trust and she's happy. So the thing is कि जो हम मांग रहे होते हैं actually is वो feeling, not वो चीज़. मगर हम समझते हैं कि वो for instance जो सुकून हम चाहते हैं या जो एक कि दिल मुतमईन हो, जो हम ढूंढ रहे होते हैं कि वो अगर हमें वो गाड़ी बंगला मिलेगा तभी हमें महसूस होगा, या वो हमें रिश्ता मिलेगा तो तभी हमें महसूस होगा. बट द थिंग इज़ कि कहते हैं कि हम जो भी मांगे ना, यूनिवर्स, खुदा, डिवाइन कभी मतलब मना नहीं करता. वी आर ऑलवेज ग्रांटेड आवर विशेस.
प्रॉब्लम इसके हम देख नहीं पाते. प्रॉब्लम इसके हमारी रूह की लैंग्वेज है इमोशंस, और इमोशंस से हम भागते हैं. तो व्हेन वी आर आस्किंग फॉर दीज सर्टन थिंग्स, तो हम वो फीलिंग्स मांग रहे होते हैं, और वो फीलिंग्स हमें मिलती हैं थोड़ी थोड़ी करके, बेशक इधर उधर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में. आप सोचो कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है. फिर आप सोचो कि जब आप ट्राई टू इमेजिन, विजुलाइज कि आपके पास वो सब कुछ है, देन इमेजिन व्हाट आर यू फीलिंग. वो जो फीलिंग आएंगी ना आप देखना आपके पास ज़िंदगी में ज़रूर होगी वो फीलिंग. उसका थोड़ा सा, उसका छोटा हिस्सा ज़रूर होगा. एंड दैट इज़ द साइन कि दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फॉलो. कि वहाँ उस रास्ते पे चलने से, उस फीलिंग के पीछे चलने से आप अपनी उस ख्वाहिश तक पहुँचेंगे, जो अल्टीमेट, जो आखिरी ख्वाहिश होती है, जो मैंने भी डिज़ायर के बारे में भी पढ़ा था ना. This reading was pretty deep for a first reading, if you ask me. That is how you know कि something is good for you. जहाँ आपको दिल से खुशी और सुकून मिलता है, joy. I also had a question like how do you know something is not good for you, कि जहाँ से आपको चले जाना चाहिए, अगर कोई रिश्ता है या कोई जॉब है, या how do you know like कोई काम है, कोई जो भी है कि like ये आपके लिए नहीं है. Even family issues में होता है ना कि like उनसे मिलना है, नहीं मिलना, दोस्त होते हैं, like is this friend good for me or not. How do you know, what is your soul's way of telling, कि आपकी रूह आपको कैसे बताती है, आपका दिल कैसे बताता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है. Interesting. I got the Shah of Cups, the King of Cups. The King of Cups जो होता है ना, वो उसका भी काउंटर पार्ट होता है मलिका का. But interestingly in this question, क्योंकि जो King of Cups होता है वो बहुत emotionally well balanced होता है. Yeah. So in this, the answer to this question, it would be the shadow aspect of the King of Cups. कि आपको क्या feel होगा उस वक्त. And I will read it out ताकि आप ये ना समझें कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ. The shadow aspect of the King of Cups. Moody, emotional, overwhelmed feel करेंगे and out of touch with spirituality. कि अपनी जो भी आपका religion है या faith है या belief है, उसके साथ आप connection नहीं हो पाएगा. You will feel moody and you will feel unhealed, कि जैसे आप वो reaction दे रहे हैं जो आप देना नहीं चाहते हैं. When this card appears for you, you are being led to heart-based living and being reminded that peace internally translates to an external form of healthy power. कि वही बात जो मैं कह रही थी कि जो अंदर का सुकून है वो आप अपने like externally वो इस तरह दिखता है कि आप अपने power में होते हैं, like healthy power में. मुझे सवाल भी इनमें से जो एक सवाल है, What does it feel like to listen to my heart and be a messenger of love? Interesting. हम बात भी ये कर रहे हैं आपकी रूह की लैंग्वेज की. So you'll know even कि like your heart, your ruh, your intuition will always be calm. And when someone is triggering you out of that again and again, और वापस उसमें आप उसके सामने उस इंसान के साथ या उस सिचुएशन में, उस जॉब में सेटल नहीं हो पा रही, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में, मतलब इमोशनल जो पोटेंशियल होता है, calmness, बैलेंसनेस में नहीं आ पा रहे बार बार, then it's a sign for you. Okay, it's not good for you.
yeah, I just want to ask for any closing messages. And there we have this card. This is such a beautiful card. Two of Cups. It's almost like a promise or a motivation. I love this card. The illustration in this deck of this card, Two of Cups, which is often about love and lasting love. It's almost like a hope, like a promise to hold on to hope and keep working. And the next card was Three of Cups. So जो आप चाहते हैं वो सब है आपके लिए. Three of Cups is also community, belonging, everything. So keep doing the work and you'll get there, is the promise. Or the cards are, or at least how I'm interpreting it. So yeah, I hope it helped. And I'll see you soon with a new reading.